अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैठे अजीज़ों में सान अहमद तिलावत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. शाहज़ेब नैयर साहब तर्जुमा। C'était les versets 10 à 13 de la sourate Az-Zumar, chapitre 39 du Saint-Coran. Je vous présente la traduction de ces versets. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux.
जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है, पढ़ता हूँ। Celui qui prie Allah avec क्या dévotion जो pendant शख्स les heures रात de la की घड़ियों nuit, se में prosternant सजदे et और se क़याम tenant की debout, सूरत में et qui craint l'au-delà, फरमाबरदारी का et qui नमूना दिखाता espère है la miséricorde de और son आखिरत Seigneur, से डरता है est-il pareil à और अपने रब celui की qui ne fait रहमत pas की tout उम्मीद cela? रखता है? वो Dis, नाफरमान की तरह ceux हो qui सकता है? savent peuvent-ils être तो égaux कह à दे, ceux qui ne savent क्या pas? इल्म वाले लोग En और जाहिल vérité, seuls ceux बराबर qui हो sont सकते doués हैं? d'intelligence prendront garde. नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद लोग हासिल किया करते हैं। De même, dis, इसी ô तरह mes कह दे serviteurs qui कि ऐ croyez, मेरे craignez मोमिन votre बंदो, Seigneur. अपने रब Pour का ceux qui तकवा font le इख्तियार bien करो। dans cette vie, वो ici, लोग il y a le जो bien, इस दुनिया में et la इलाही terre अहकाम को d'Allah est पूरी vaste. तरह अदा करते हैं, En vérité, उनके लिए अगले les जहान endurants में auront नेक leur बदला मुकर्रर है। récompense sans mesure. और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। Dis, en साबिरों को vérité, उनका il अज्र m'est commandé बगैर d'adorer हिसाब के Allah en पूरा पूरा étant दिया जाएगा। sincère envers lui dans ma foi. तू कह दे कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इस तरह इबादत Et il करूं m'est कि commandé इताअत d'être le सिर्फ उसी premier के de लिए ceux मखसूस qui कर se दूं, soumettent à lui. और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे बड़ा फरमाबरदार बनूं। Danish Khouram pour le poème. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मंजूम कलाम सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए दोस्तों प्यारो उकबा को मत बेसारो, कुछ ज़्यादे राह ले लो, कुछ काम में गुजारो। दुनिया है जाए फानी, दिल से उतारो। दुनिया है जाए फानी, दिल से उतारो। ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैया रानी। जी मत लगाओ इससे, दिल को छुड़ाओ इससे। जी मत लगाओ इससे, दिल को छुड़ाओ इससे। रग़बत हटाओ इससे, बस दूर जाओ इससे। यारो ये अजदहा है, जाको बचाओ इससे। यारो ये अजदहा है, जाको बचाओ इससे। ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैया रानी। कुरआन किताब रहमा,
सिखलाए राहे इरफान कुरआन किताब रहमान सिखलाए राहे इरफान जो इसके पढ़ने वाले उन पर खुदा के फैज़ान उन पर खुदा की रहमत जो इस पे लाई ईमान उन पर खुदा की रहमत जो इस पे लाई ईमान ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैयरानी है चश्माए हिदायत जिसको हो ये इनायत है चश्माए हिदायत जिसको हो ये इनायत ये है खुदा की बातें इनसे मिले विलायत ये नूर दिल को बख्शे दिल में करे सिरायत ये नूर दिल को बख्शे दिल में करे सिरायत ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैयरानी कुरआन को याद रखना पाक एतकाद रखना कुरआन को याद रखना पाक एतकाद रखना फिक्रे माद रखना पास अपने ज़ाद रखना एक सीर है प्यारे सिद्ध को सदाद रखना एक सीर है प्यारे सिद्ध को सदाद रखना ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैयरानी ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैयरानी Zahir Khan Zahab pour le rapport.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी जामिया अहमदिया यूके के कारकुनान, तलबा Seydi, les membres du personnel de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni, les élèves ainsi que les enseignants sont reconnaissants envers Allah pour nous avoir permis de profiter de nouveau de la présence bénie de sa sainteté le calife ici à la Jamia Ahmadiyya après sa dernière visite qui date du 15 décembre 2019, soit après 3 ans et demi. Alhamdulillah ala dhalik. 68 élèves ont complété leurs études au cours de cette période. Il s'agit des 4 promotions de 2019 à 2022. Ces missionnaires sont en train de servir la communauté. En raison de l'épidémie du Covid-19, aucune cérémonie de remise de diplôme n'a eu lieu pour ces élèves au cours de cet intervalle. Et aujourd'hui, Inch'Allah, les élèves de ces promotions vont recevoir leur diplôme des mains bénies du calife. Ainsi, par la grâce d'Allah, la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni a présenté à sa sainteté le calife 199 missionnaires au total. Alhamdulillah ala dhalik. Ces élèves qui vont recevoir aujourd'hui leur diplôme des mains bénies du calife ont débuté leurs études à partir de 2012 jusqu'à 2015. Ils ont parcouru plusieurs étapes lors de leur cursus d'études qui a duré 7 ans et ils ont passé par plusieurs étapes dans leur formation pratique et physique. Et à chaque étape, ils ont été guidés par sa sainteté le calife. Les points forts de leurs œuvres au cours de ces 7 dernières années sont les services qu'ils ont rendus lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni en présence de sa sainteté le calife, lors de la conférence annuelle sur la paix, lors des ijtimas de la Khudam al-Ahmadiyya et des Waqifin-e-Nau. Ils ont également servi à Islamabad sous l'égide de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya du Royaume-Uni. Avant l'épidémie du Covid-19, ces élèves ont eu l'occasion de prier derrière le calife et d'avoir des audiences privées avec sa sainteté le calife. Et sans nul doute, il s'agit là des aspects les plus importants et les plus plaisants de leur formation. Lors de cette 8e cérémonie de remise de diplôme, les élèves du Royaume-Uni, de la Belgique, de la Norvège, de l'Allemagne et de la Suède vont recevoir leur diplôme des mains bénies de sa sainteté le calife. Asif Mounir de la Nouvelle-Zélande et Hassan Ahmad, 2 élèves de la promotion de 2011, sont absents en raison de leur affectation. Les pères de ces 2 Murabbis vont recevoir leur diplôme des mains du calife avec la permission de sa sainteté le calife. De même, Daniel Ahmad est absent aujourd'hui pour cause de maladie. Son diplôme lui sera transmis à travers le bureau du Tabshir. Mohamed Raza Salim, un élève de la promotion de 2019, fils de Mohamed Salim Zafar Saheb, qui a débuté ses études à la Jamia en 2012, est décédé lors d'un accident en 2016, quand il était en 4e année. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lors de la cérémonie d'aujourd'hui, son père recevra un diplôme en guise de souvenir des mains bénies de sa sainteté le calife avec la permission de sa sainteté le calife. Qu'Allah fasse que les étudiants de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni, le personnel ainsi que les enseignants soient à tout jamais fidèles envers le califat. Nous prions que nos services en faveur de la religion attirent le plaisir et les prières de sa sainteté le calife et que nous ne commettions aucune action qui puisse attirer le déplaisir du calife. En sus de cette prière, nous sommes reconnaissants envers sa sainteté le calife pour avoir accepté notre invitation
et pour avoir béni cette cérémonie. En toute humilité, nous demandons à Sa Sainteté le Calife de remettre à ces murabbis leur diplôme de shahid et de remettre également des diplômes aux élèves des 6 classes restantes qui sont arrivés en première, deuxième et troisième position lors de l'année 2021-2022. हुजूर की इजाज़त से अब सबसे पहले जामिया अहमदिया यूके के तालीमी साल 2021-22 में दर्जा मुमायदा से दर्जा खामसा तक अव्वल दोम और सोम पोजीशन लेने वाले तलबा हुजूर से इसनाद इम्तियाज़ हासिल करेंगे। अजीज़म उसामा महमूद अव्वल दर्जा खामसा, अजीज़म अलीम ज़िया दोम दर्जा खामसा, अजीज़म फ़हीम अहमद दानिश सोम दर्जा खामसा। दर्जा राबिया में अजीज़म मबरूर अहमद ज़ेब फ़र्रुख अव्वल, अजीज़म हज़ीम आरिफ दोम, अजीज़म एहतिशाम अहमद आरिफ सोम। दर्जा सालसा अजीज़म सरफराज अहमद, अजीज़म सुहेब ताहिर राना दोम, अजीज़म मुताहर मुबशर इफ़्फ़त सोम। दर्जा सानिया अजीज़म ताहुद्दीन खानदकर अव्वल, अजीज़म मुताहर अहमद दानिश दोम, अजीज़म खाकान मुज़फ़्फ़र अराई सोम। दर्जा उला अजीज़म सबाहुद्दीन अलीम अव्वल, अजीज़म माहिद अहमद दोम, अजीज़म अतर अहमद सोम। मुमाहिदा अजीज़म फ़रीद अहमद ख़ान अव्वल, अजीज़म हन्नान अहमद मन्नान दोम और अजीज़म मसरूर अहमद औदे सोम। अब मुरब्बियान कराम 2019 में जो हैं अजीज़ मुकर्रम दानियाल महमूद साहिब मुरब्बी सिलसिला, ये वो बैच है जो 2019 में फ़ारिग़ तहसील हुआ है जामिया अहमदिया यूके से। मुकर्रम सैयद अदील अहमद शाह साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम हाफिज़ ताहा दाऊद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम सफ़ीर अहमद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम शाहज़ेब अतर साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम ज़ाफ़िर अहमद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम आमिर सईद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम शहरयार अकबर साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम हमज़ा सुल्तान साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम फैज़ान वडाइश साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम राना कामरान अहमद शम्स साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम नदीम अहमद भट्ट साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मोहम्मद रज़ा सलीम साहिब, इनकी डिग्री मुकर्रम उनके वालिद मुकर्रम मोहम्मद सलीम ज़फ़र साहब, यादगारी सर्टिफिकेट है इनका, हजूर की इजाज़त से वो वसूल करेंगे। इसके बाद 2020 में जामिया अहमदिया यूके से फ़ारिग़ तहसील होने वाले मुरब्बियान इकराम, मुकर्रम आसिफ बिन उवैस साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अब्दुल हादी साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम सुहेब अहमद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम हुज़ैफ़ा ताहिर साहिब मुरब्बी सिलसिला,
मुकर्रम मोहम्मद अतर साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम सरफराज अहमद बाजवा साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अदील तैयब साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अज़हर अहमद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अताउन नूर हादी साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम फ़रहाद अहमद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मुआज़ अहमद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम फ़तीन अंजुम साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम नसर अहमद अरशद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम तहमीद अहमद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मुबारिज़ महमूद अमीनी साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम शहजाद अहमद साहिब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम हारिस रफ़ीक डोगर साहिब मुरब्बी सिलसिला। इसके बाद 2021 में फ़ारिग तहसील होने वाले मुरब्बियान इकराम, इनमें मुकर्रम कासिम महमूद ख़ान साहब मुरब्बी सिलसिला, लेकिन इससे पहले मुकर्रम दानियाल अहमद साहब वो नहीं आ सके, सॉरी, मुकर्रम समर अहमद शेख साहब मुरब्बी सिलसिला जी, मुकर्रम कासिम महमूद ख़ान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम समर अहमद शेख साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम उसामा भट्ट साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अलीम अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम इमरान अकरम साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मशहूद अदीब अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम आसिफ मुनीर साहब की इनकी जो सनद है उनके वालिद मोहतरम वसूल करेंगे। मुकर्रम मुनीबुर रहमान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम नुमान अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मोहम्मद सुहैब अहमद ख़ान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम हसान अहमद ज़फ़र साहब इनकी डिग्री, इनका सनद जो है इनके वालिद मोहतरम वसूल करेंगे। मुकर्रम फ़रीद अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम शिराज अहमद ख़ान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम साद अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मुस्तफ़ा अहमद सिद्दीकी साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम उस्मान मन्नान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम खालिद वलीद गुंजालिस साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अनस अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मशहूद अहमद ख़ान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम सैयद तलाल अहमद शाह साहब मुरब्बी सिलसिला। और इसके बाद 2022 में फ़ारिग तहसील होने वाले मुरब्बियान इकराम, मुकर्रम मुसब रशीद डोगर साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम रुमान महमूद बासित साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम आकाश अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम तलत श्याम साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम दानियाल तसव्वुर अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम वकास एहसानुल्लाह साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मुतहर अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम जलीस अहमद ख़ान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम राना अब्दुल मुकीत साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मुबारज़ अहमद चौधरी साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम हारिस अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम उसामा मुबारक साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम उस्मान अली अंजुम साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मिर्ज़ा उसामा बशीर अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अब्दाल अहमद तोकीर साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मुदस्सर अहमद भट्ट साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम वलीद अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला,
और मुकर्रम शाहजेब तैयब साहब मुरब्बी सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अल्हम्दुलिल्लाह कि चंद सालों के वक़्त के बाद Alhamdulillah, aujourd'hui, après un intervalle de quelques années, se tient la cérémonie de remise de diplôme de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. इस अरसे में जहाँ जो फॉर्मल फंक्शन थे Au cours de cette période, les programmes formels comme la remise de diplôme ou d'autres classes n'ont pas eu lieu. तलबा से जो मेरी मुलाकात हुआ करती थी इनफरादी तौर पर, D'ailleurs, les audiences individuelles que j'avais avec les étudiants de la Jamia n'étaient pas régulières. बहुत सारे तलबा जो पिछले 3-4 साल में फारग हुए हैं या आज C'est तक pourquoi जामिया में je ne reconnais probablement pas les étudiants ou je ne pourrais pas reconnaître les étudiants qui ont obtenu leur diplôme पहचानता या au नहीं cours de पहचान ces सका 3 ou और 4 मास्क की वजह dernières से कोई années ou ceux qui étudient actuellement à la Jamia. D'ailleurs, s'ils portent le masque, je ne pourrais इसका भी pas एक les फ़ायदा होता reconnaître. है ज़ाती तारुफ का। J'ai dû demander à certains d'enlever चेहरे leur भी याद masque रहते हैं pour les उनके reconnaître. कोर्स के बाद उनके Les काम भी याद rencontres रहते हैं personnelles ont donc des और अगर कोई avantages. दिलानी हो तो वो भी दिलाई जाती है। Je me souviens de leur visage par बहरहाल la suite अल्लाह ताला et का फजल है ensuite, grâce à leur rapport, je कि me souviens वफा également de leurs œuvres et तकरीबन je peux leur खत्म है faire des rappels si nécessaire. और Par अब la grâce हमारा d'Allah, cette épidémie est presque terminée मामूल की et ज़िंदगी maintenant वापस आ la रही vie है। revient à la normale. इंशाअल्लाह जो पुरानी एक्टिविटीज़ थी Inch'Allah, les anciennes जो activités et les autres programmes vont प्रोग्राम थे reprendre à वो l'avenir. दोबारा शुरू हो जाएंगे। हमेशा याद रखें कि जिस मकसद के लिए Rappelez-vous toujours जामिया में que दाखिल vous हुए devez थे toujours tenter d'atteindre l'objectif pour lequel vous उसको vous êtes enrôlé à la Jamia Ahmadiyya. हासिल करने की हमेशा कोशिश करनी है आपने। उस मकसद की कुछ तरबियत लेकर À présent, vous avez quitté अब la कामयाब Jamia हैं। après avoir reçu une formation à cet effet. ये नहीं कि वो मकसद हासिल कर लिया, Mais cela ne signifie pas que vous avez atteint cet objectif. रास्ते दिखाए गए हैं कि ये रास्ते हैं On vous a tout simplement उस montré les मकसद को हासिल voies pour करने के लिए atteindre l'objectif d'un waqf जो एक zindagi, वाक़फ़ ज़िंदगी d'un missionnaire, और d'un मुरब्बी morabbi et और d'un मुबल्लिग़ होना muballigh. चाहिए। बस Ainsi donc, इस बात को हमेशा याद n'oubliez रखें। jamais ces points-là. अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं À présent, vos responsabilités ont accru और
इस मकसद को हासिल करने के Et लिए vous allez devoir travailler dur pour atteindre cet objectif. पहले आप उस्ताद से मदद ले लेते थे Auparavant, vous receviez de l'aide de la part des सिर्फ enseignants इसलिए où ils vous testaient afin d'attirer votre attention sur कि ये certains बातें points. हैं जिनकी तरफ तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए लेकिन वो भी महदूद होती हैं Mais tout cela était इल्म को वसी limité. करना Il incombe à chaque élève, à chaque morabbi, d'accroître sa connaissance. इसके लिए ज़ाती मुतालिया भी Ainsi donc, l'étude personnelle est également nécessaire. ये ज़ाती मुतालिया Et cette étude personnelle doit s'améliorer une fois qu'on est sorti de la jamia बाज़ et qu'on मुरब्बियान travaille sur le terrain. चंद साल या कुछ अरसे से मैदान अमल में हैं। Certains morabis servent d'ores et déjà sur le terrain depuis quelques années ou plus. एक अच्छे मुरब्बी और मुबल्लिग को Au cours de cette période, un bon morabbi, un bon muballigh doit s'évaluer et se demander क्या si je suis en train de progresser vers la réalisation de mon objectif अपना मकसद हासिल करने के असूल की तरफ जा रहे ou हैं si j'ai pu atteindre mon objectif dans une certaine या उसके लिए mesure कोशिश कर रहे हैं ou si je suis en train de m'évertuer pour atteindre cet objectif. क्या हमारी Un bon missionnaire doit se demander s'il a accru la norme de ses actes d'adoration, s'il a augmenté sa connaissance, क्या हमारे अखलाकी मयार बुलंद हुए s'il a progressé dans ses qualités morales. एक और सोच होती है La pensée est différente pendant la période étudiante et quand on est sur le terrain d'action, la pensée est complètement différente. मुरब्बी Lorsqu'on sert sur le terrain, les gens regardent de très près le murabbi, le muballigh. जायजा ले रहे होते हैं Les gens analysent l'action et la connaissance du muballigh, du की murabbi. बातों के मयार कैसे हैं Ils analysent la norme de ses actes d'adoration. ये बातें हमेशा याद रखें Ainsi, vous devez toujours avoir en tête ces लोगों के points, लिए notamment que vous êtes un modèle pour les autres, या लोग ये तो रखते हैं où les gens s'attendent à ce que vous, en tant que murabbi, vous soyez un exemple pour और इस eux. लिहाज से फिर अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करने की Et जरूरत en ce sens, il faut apporter en soi des changements. जब ये जायजा लेंगे आप तो ये जायजा Quand, en tant que murabbi, vous allez faire ce bilan, मयार के vous allez atteindre तरफ लेके un niveau supérieur. आपको ये कोशिश होगी कि मैंने ये आला मयार हासिल करने Quand vous allez faire ce bilan, vous allez faire des efforts pour atteindre इसी तरह un niveau supérieur. रुपया निकल रहे हैं De même, les nouveaux murabbis qui sortent de la jamia doivent aussi garder ces points à l'esprit. वो अपने वक्फ के मकसद को C'est là qu'ils pourront atteindre l'objectif de leur waqf. जामिया के 7 साल तो जैसा कि मैंने कहा Les 7 années de la jamia, comme je l'ai dit, doivent montrer la voie pour acquérir divers types de connaissances. इनको हासिल करना इनसे सही फायदा Vous उठाना devez acquérir ces connaissances, vous devez en tirer profit. अब मैदान अमल में आकर Tout cela dépend désormais de votre effort personnel ज़ाती कोशिश पर une भरोसा। fois que vous êtes sorti sur le terrain. कामयाब मुरब्बी और मुबल्लिग वही हैं Les murabbis qui remportent du succès sont ceux qui s'efforcent constamment pour atteindre ces objectifs. बस अब आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई À présent, vos responsabilités ont pris de l'ampleur इस लिहाज से et en ce sens, vous devez continuer à faire vos bilans लेते रहें et ce de manière constante. देखें कहाँ हमारे कदम रुके हैं Vous devez examiner où vous vous êtes कहाँ हमें arrêté इस्लाह करनी है et où vous devez vous améliorer et où vous devez tenter de progresser. बहरहाल जिस वक्त मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु À présent, je citerai quelques conseils que le musulman Maud a prodigués au Murabbi à différentes occasions. मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने तवील दौर खिलाफत में Au cours de son long califat, Hazrat Muslim Maud, qu'Allah soit satisfait de lui,
a organisé le système administratif de la Jamaat. रूहानी तरक्कियात और तबलीगी कामों Et il s'est occupé aussi du progrès spirituel दीन के de la Jamaat et du travail de la prédication, de la diffusion du message de la religion. Et il a également guidé les Murabbi. Il les a organisés, il a prodigué des conseils aux étudiants de la Jamia तलबा को भी ainsi qu'aux Murabbi à différentes occasions. मुख्तलिफ वक्तों में नसाए फरमाई जो ऐसी नसाए हैं कि अगर Si les Murabbi appliquent ces बयान conseils, मुबल्लिगीन ils pourront apporter en ce monde une grande révolution. तो एक इनकलाब लाने का जरिया बन सकते हैं आपकी नसाए पुराने मुरब्बियान Ces conseils ne s'adressaient pas uniquement aux anciens Murabbi, mais aussi à ses compagnons qui avaient vécu à l'époque du Messie premier d'Islam. तो आपने उन्हें नसाए फरमाई Il les avait envoyés comme Murabbi et il leur a prodigué des conseils. हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये नसाए Ces conseils et ces directives du Muslim Maud ont également été publiés sous la forme d'un livre. ज़री हदायत बराए मुबल्लिगीन के नाम से Cet ouvrage a pour titre Zari Hidayat Barai Murabbi. और मुबल्लिग को ज़रूर अपने पास Tout रखना चाहिए Murabbi doit l'avoir à ses côtés और इसका मुतालिया et करके tout Murabbi doit अपने l'étudier लिए et इसमें doit से en prendre des नोट्स notes. बनाने चाहिए और इन नोट्स को फिर जब देखते रहेंगे Tous les Murabbi doivent en extraire des points et les conserver sous forme de résumé. बना के रखेंगे अपने पास Lorsque vous aurez ces points devant vous à tout तो अपनी instant, हालत की बेहतरी vous allez pouvoir vous concentrer sur l'amélioration de votre conduite, de votre condition, होती रहेगी अब et cela va aussi vous servir de rappel. इसको भी ज़रूर देखें बहरहाल En tout cas, vous devez également prendre cela en considération. की तरफ तवज्जो दिला देता हूँ Pour l'instant, j'attire votre attention sur quelques points importants brièvement. ये निकात हर मुरब्बी को Tout Murabbi doit avoir ces points à l'esprit. पहली बात ये कि मुरब्बी और मुबल्लिग बेगर्ज हो Le premier point est que tout Murabbi doit être désintéressé अगर बेगर्ज et होगा altruiste. ذاتی अगराज नहीं होगी S'il est désintéressé, s'il n'a pas d'objectif personnel, अपनों की तरबियत में भी मदद मिलती रहेगी il ne cessera de former les membres de la communauté et cela va également l'aider dans le domaine de la prédication. हमारे बहुत से बुजुर्ग मुबल्लिगीन ने Beaucoup de nos anciens Murabbi ont suivi cette pratique और इस तरह उनके तबलीग et के c'est मैदान ainsi qu'ils ont इसी तरह élargi से चले गए le champ de leur prédication. ना सिर्फ पुराने ज़माने के Non seulement durant les temps anciens, mais मुनव्वर aussi खुर्शीद साहब à notre की बात époque. हुई तो मैंने उनकी मिसाल दी। Monawar Khurshid Sab est décédé किस तरह récemment वो et j'ai relaté comment il était en contact avec tout le monde हर एक et से ce de manière désintéressée. अपनों और गैरों से ताल्लुकात थे उनके Il avait maintenu de bonnes relations avec les membres de la communauté उन्होंने बड़ी et कुर्बानियां ceux qui étaient externes à la communauté, et il a aussi consenti à de grands sacrifices à cet égard. Et là où il a vécu, जमातें भी il a établi des jamaats कहते भी हासिल et il a également eu des convertis. बस इस बात से हमेशा फ़ायदा उठाएं Ainsi donc, profitez toujours कि कुरान के de leurs expériences du passé. और किस तरह उन्होंने अपने काम किए Et de la manière dont ces anciens missionnaires ont œuvré, अपने काम et la को façon dont nous allons devoir améliorer notre travail बेगर्ज होकर en fonction de notre situation. Mais l'essentiel est de travailler de manière désintéressée et en toute abnégation. कि मुरब्बी और मुबल्लिग में Ensuite, il est également important que le Murabbi soit courageux et brave. तरबियती अमूर में भी On doit être courageux et brave tant en matière de la tarbiya et de la prédication. सही इस्लामी On doit présenter le point de vue islamique correct et sans crainte. ये नहीं Il ne faut pas maintenir le silence en raison de quelques considérations कर दिया जो ou expliquer certains points de manière ambiguë pour se sortir d'affaire. अपनी जान बचाने की कोशिश की इस तरह नहीं
Il ne faut pas agir de la sorte. Vous devez présenter votre point de vue avec audace et courage. Il existe aujourd'hui de nombreux maux dans la société et il incombe à chaque Murabbi de les expliquer avec sagesse et courage et de tenter de réformer les autres. Cette tâche incombe à tout Murabbi. Parfois, nous hésitons à présenter certains points en craignant ce que diront les autres, de peur d'énoncer des propos déplacés, de peur d'avoir une mauvaise influence sur autrui. Si votre approche est correcte et si vous usez de sagesse, ces mêmes points qui semblaient difficiles à énoncer seront faciles. Si vous vous attaquez directement à quelqu'un, cela peut avoir un effet négatif, mais si vous expliquez vos points avec sagesse, si vous faites une analyse au préalable, eh bien cela aura un effet positif. Ainsi donc, vous devez présenter vos points avec courage et avec sagesse, vous ne devez ressentir aucune peur. Ensuite, il est également très important que chaque Murabbi ressente de la compassion pour les membres de la communauté et pour les autres aussi. Il doit ressentir leur douleur. Et lorsque autrui verra pareille compassion, cela va établir une relation personnelle avec cette personne et il sera plus facile de former autrui et la prédication sera elle aussi plus facile. Un Murabbi doit également se familiariser avec le savoir de ce monde. Il ne doit pas se contenter d'acquérir des connaissances religieuses. Lisez les livres de ce monde, les journaux, les articles. Vous devez également connaître l'actualité. Si vous possédez cette connaissance, vous pourrez présenter ces points pour favoriser la réforme des autres. Et quand vous allez présenter ces points, quand l'autre va constater que vous connaissez aussi l'actualité, cela aura un impact positif sur lui. Il est également très important que les Murabbis prennent soin de leur propreté et de leur apparence et que leurs vêtements soient dignes. L'ère de l'étudiant est passée et maintenant vous êtes sur le point de servir sur le terrain. Vous devez porter des vêtements qui sont dignes. Vous devez vous soucier de votre propreté, vous devez porter des vêtements dignes. Cela vous poussera à avoir une attitude digne et cela aura également un effet positif sur les autres. D'aucuns pensent que pour prêcher notre message aux autres, à titre d'exemple, il faut ressembler aux autres, il faut se mêler aux autres. Certes, écoutez leurs propos. Usez dans le respect de leur style. Mais il est tout à fait mal d'agir comme eux. Nous devons créer une révolution dans le monde. Nous devons conduire le monde derrière nous. Nous devons présenter au monde l'enseignement islamique. Il est donc très important pour un Murabbi d'être digne dans son attitude, dans son comportement, afin de favoriser la réforme morale des membres de la communauté et afin de transmettre le message de l'islam aux autres. Votre apparence va beaucoup influer dans ce domaine. Quand votre apparence sera bonne, vous allez comprendre que vous avez aussi certaines limites et que vous devez vivre à l'intérieur de ces limites. Ainsi donc, vous devez être vigilant à cet égard.
Il est également très important de se contenter de sa अपनी situation. आमद के मुताबिक करने की कोशिश Vous devez budgétiser vos dépenses personnelles en fonction de vos revenus. Les allocations que vous recevez sont très faibles, vous devez tenter de vivre en puisant dans cette allocation minimale. Oui, si Allah vous offre sa grâce, si vous avez un revenu supplémentaire de différentes sources, eh bien, cela est une grâce de la part d'Allah. अगर ख्याल रखते हैं Si vos parents vous soutiennent, तो ये भी c'est là une grâce de leur part et une grâce de la part d'Allah. Mais en tout cas, il ne faut pas espérer de l'aide d'autrui. अपनी हदूद में रहना है, Il faut tenter de vivre dans ses limites. अखराजात करना Vos dépenses doivent être en fonction de vos revenus. है, अपने बीवी बच्चों को ज़हनों में भी डाल Et vous devez insuffler la même attitude dans l'esprit de votre épouse et de vos enfants, et c'est là que la paix régnera au sein de vos foyers. और इसी तरह De même, portez une attention particulière quant aux dépenses des biens de la Jamaat. Vous devez dépenser ces biens avec une grande prudence. Si vous êtes sobre dans vos dépenses personnelles, vous devez veiller à dépenser à bon escient les biens de la Jamaat. Cela aura un effet silencieux de votre part sur les membres de la Jamaat. Et ils comprendront que vous protégez les biens de la Jamaat et que vous y prêtez attention. और जब ये होगा Et quand vous agirez de la sorte, आपकी हर बात का असर chacune de vos paroles aura un effet sur les membres de la Jamaat. फिर ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि खुद पसंदी Il est également très important de ne pas être vain et d'avoir une attitude fanfaronne. कोई लेक्चर दें Si vous avez dit quelque chose, si vous avez prononcé un discours, si vous avez accompli une œuvre quelconque qui profite aux gens हो और उनको पसंद आए et que les gens apprécient cette action de votre part, इसको eh bien, vous ne devez pas en faire une source de fierté किसी pour किस्म की फख्र vous-même. मुबाहत नहीं होनी चाहिए किसी किस्म Vous की ne devez खुदगर्दी नहीं होनी être victime d'aucune vantardise, vous devez être victime d'aucune लोगों के vanité. सामने लोगों की बातें सुन के फिर और भी ज्यादा Si les autres font votre éloge, अपने आप को vous ne devez pas tenter de vous louer davantage et vous ne devez pas non plus souhaiter que ना les किसी autres vous रिपोर्ट में louent. इस किस्म का इजहार हो Et dans vos rapports, ne dites pas que telle ou telle action de votre part a été avantageuse à la Jamaat. फजलों का जिक्र जरूर Oui, करें mentionnez définitivement les faveurs d'Allah, que ce travail a été accompli, qu'Allah उसका असर हुआ a béni cette œuvre et que cela a eu un effet positif sur les gens. Sinon, quant à nous, अगर nous दूसरे sommes इस्तफा- des riens. तारीफ करते हैं हाँ दूसरों को हक है Les autres peuvent apprécier vos œuvres, ils ont ce droit, ils peuvent faire vos और जरूर éloges, तारीफ करें, et s'ils font vos éloges et le font devant ज़्यादा vous, से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार vous devez करो, implorer davantage le pardon de Dieu. इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह ताला Implorez le pardon d'Allah pour qu'il vous protège हमें महफूज de toute forme d'arrogance और इस वजह से हमारी तरक्की की et बजाय que तनज़्ज़ुल ना शुरू हो vous ne commencez pas à décliner en spiritualité au lieu de progresser en raison फिर de ये भी cette बहुत अहम arrogance. बात है Il est également très important d'être assidu dans ces actes d'adoration. Il faut être assidu dans l'accomplissement de la prière de Tahajjud. से ये उम्मीद की जाती है On s'attend à ce qu'un Murabbi, un Muballigh, accomplisse régulièrement la prière de जैसा भी Tahajjud. वक्त है जैसे भी हालात हैं Quelle que soit l'heure, quelles que soient les circonstances, सिवाय किसी मजबूरी के tentez d'accomplir la prière de Tahajjud sauf contrainte extrême. की तरफ तवज्जो हो Il faut être régulier dans ces prières nawafil. नमाज जमात की इंतहाई पाबंदी Il faut aussi que vous soyez très régulier dans la prière en congrégation. Parfois, certaines jamaat objectent que le Murabbi n'a pas ouvert la mosquée quand nous sommes venus pour accomplir la salat, que la mosquée était fermée ou que le centre de prière était fermé. मौजूद हैं वहाँ Il ne doit jamais y avoir pareille objection contre un Murabbi. तो अपना नमाज Si vous êtes présent là-bas, si vous n'êtes pas sorti pour un travail de la jamaat, के लिए खुली होनी votre centre de prière, votre mosquée doivent être ouverts pour la चाहिए salat. कभी एहसास ना हो बाज़ ये भी शिकायत भी आ जाती Certains disent que le Murabbi n'est pas venu pour accomplir la prière d'Al-Fajr, है कि जी फलां बीमारी même है, s'il फलां peut है, s'excuser en raison de telle ou telle maladie ou pour telle ou telle raison. तो कोई बात नहीं, Cela लेकिन peut se आदत faire ऐसा हो जाना occasionnellement, mais si cela se produit habituellement, cela aura un effet négatif sur les membres de la Jamaat. कि दुआओं और इबादत के बगैर Vous devez toujours comprendre que sans la prière et sans les actes d'adoration, vous ne pourrez rien accomplir.
et que toutes nos œuvres se feront uniquement par la prière, et que c'est la prière qui est la source du progrès de la Jamaat. C'est la prière qui est le moyen pour favoriser les efforts dans le domaine de la formation morale et spirituelle et dans le domaine de la prédication, et que nous ne pourrons rien accomplir sans attirer les bénédictions d'Allah. Et les actes d'adoration sont très importants pour attirer les bénédictions d'Allah. Il faut porter une attention particulière à la prière. Le souvenir de Dieu est aussi très important. Tout le monde doit être très vigilant à cet égard. Un Murabbi, un Muballigh doit aussi posséder des capacités administratives. Il ne faut pas être uniquement apte à régler vos problèmes d'ordre religieux. Vous devez aussi posséder des compétences administratives. Vous devez connaître les règles de la Jamaat. Lisez ces règles de la Jamaat et vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas ces règles, demandez à vos responsables supérieurs. Vous devez également connaître les traditions de la Jamaat. Et pour cela, vous devez lire les discours des califes, leurs sermons et d'autres articles. Cela va accroître votre connaissance à cet égard. Et c'est là que vous pourrez guider correctement les membres de la Jamaat. Et vous devez également tenter de sélectionner et de former des personnes au sein de la Jamaat, en particulier les jeunes qui possèdent la capacité de maîtriser ces questions administratives. Vous devez sélectionner ces jeunes, vous devez les former selon les traditions et les règles de la Jamaat, afin que les travailleurs de la Jamaat soient disponibles pour la prochaine génération. Ceci est très important. Même si les titulaires de poste n'offrent pas une formation adéquate, les Murabbis peuvent prendre ces jeunes avec eux et les former correctement, afin que ces jeunes connaissent également les règles de la Jamaat et afin qu'ils connaissent également les traditions de la Jamaat, afin qu'ils sachent comment nous devons gérer le système de la Jamaat. Offrir cette formation incombe également aux Murabbis. Un Murabbi et un Muballigh doivent également garder à l'esprit que ceux de la Jamaat qui sont épris de ce monde s'expriment et montrent leur inquiétude sur les mauvaises pratiques qui sont en vogue ces jours-ci dans le monde. Ils expriment leur inquiétude à ce sujet. Certains ne sont pas convaincus par votre argument religieux et ils ne sont pas convaincus par vos propos. Ils disent que vous ne savez rien, voilà ce qui se passe dans le monde. Expliquez-leur avec des arguments de ces gens du monde, ces gens qui admettent à présent que certaines pratiques sont condamnables. Même les non-musulmans ont commencé à mettre en doute l'éducation dispensée aux enfants dans les écoles. Ces gens de ce monde font également beaucoup de bruit à présent concernant les droits des femmes. Ils critiquent à présent les rencontres mixtes. De nouveaux articles sont publiés à propos de la consommation de l'alcool. Il disait auparavant qu'il n'y a pas de problème si vous consommez de l'alcool une fois par semaine. Ces derniers jours, selon un nouvel article, les recherches médicales ont prouvé qu'on doit abandonner entièrement l'alcool, car l'alcool est nocif. Ainsi, vous pouvez acquérir de la connaissance sur tous ces points. Si vous étendez vos connaissances en ce sens, cela vous sera bénéfique dans le domaine de la prédication et de la formation morale et spirituelle des membres de la communauté. Comme je l'ai dit, vous devez tenter d'accroître votre savoir. Ne vous dites pas que je possède de grandes connaissances religieuses et que je peux répondre à toutes questions. Comme je l'ai dit, vous devez accroître votre connaissance de ce monde et vous devez également accroître votre connaissance religieuse. Il n'y a pas de limite quant à l'acquisition de connaissances religieuses.
Comme il est dit dans un hadith, vous devez apprendre jusqu'à atteindre votre tombe. Ainsi, vous devez accroître votre savoir. Et parallèlement à la quête du savoir, vous devez tenter de répondre aux nouvelles objections contre l'islam. Ces objections sont anciennes, on les présente sous différents angles et de différentes manières, par le biais des subterfuges du Dajjal. Ainsi donc, chaque Murabbi doit tenter d'y répondre. Il faut s'y préparer. Préparez vos réponses en accord aux enseignements du Saint-Coran. Vous devez y répondre en ayant recours à la prière. Vous devez acquérir cette connaissance auprès des autres et tenter d'y répondre. Vous devez tenter d'y répondre en lisant différents types d'ouvrages. En tout cas, chacun des vôtres doit tenter d'accroître sa connaissance afin de pouvoir répondre à toutes sortes d'objections des opposants au lieu de s'asseoir les bras croisés. Pour ce qui est du domaine de la prédication, il faut aussi savoir quel argument présenter à quelle personne. On ne peut pas parler à tout le monde en ayant recours au même procédé. Il faut diagnostiquer tout d'abord la maladie, ensuite présenter à l'autre le message. Quel sera l'intérêt d'évoquer la supériorité de l'islam sur les autres religions à celui qui n'accepte même pas l'importance de la religion? Il répondra, quelle qu'en soit la religion, j'en ai que faire. Tout d'abord, on doit le convaincre concernant la nécessité de la religion. De même, on doit d'abord convaincre l'athée de l'existence de Dieu en ayant recours à des arguments rationnels et scientifiques. En tout cas, il incombe à un Murabbi qui est en train de servir sur le terrain de trouver des arguments scientifiques et rationnels pour répondre à toutes ces questions. Et il doit aussi prier en ce sens. Il doit aussi faire des efforts en ce sens. Cela incombe à un Murabbi. Vous devez également être prêt à vous sacrifier pour autrui. Cette qualité doit abonder chez un Murabbi. Et cette action rapprochera les autres de vous et cela va créer un impact dans vos paroles. Quand l'autre saura que le Murabbi ressent de la compassion à mon égard, eh bien cela aura un effet positif. Il n'est pas question uniquement de compassion, il est question ici de sacrifice. Il faut consentir à cet égard à des sacrifices. Vous devez aussi chercher vous-même des occasions pour prêcher le message de la communauté. Certains disent que ce n'est pas l'occasion de prêcher en telle ou telle occasion et les gens ne nous écoutent pas. Comment prêcher donc? Vous devez étudier votre milieu et trouver des moyens pour prêcher le message. Tantôt la prédication se fait en nouant des liens individuels, tantôt cela se fait en organisant des séminaires sur différents sujets sous l'égide de la Jamaat. Parfois, on peut distribuer des brochures sur les solutions que présentent les enseignements de l'islam aux problèmes contemporains. Et quand les gens vont lire cela, ils vont se demander qui sont ceux qui présentent ces solutions. Et c'est ainsi que différentes voies vont s'ouvrir à vous. Ceux qui sont passionnés par la prédication trouvent de nombreuses méthodes pour prêcher le message de la communauté. Il y a également les réseaux sociaux. D'aucuns présentent des citations sur les beaux enseignements de l'islam sur les réseaux sociaux. C'est aussi un moyen de prêcher notre message. Ainsi donc, il existe différentes voies et vous devez explorer par vous-même ces différentes voies. Vous devez tenter de trouver ces différents moyens pour atteindre les gens. Vous devez tenter de trouver ces différents moyens pour accomplir le travail de la prédication et transmettre le message de l'islam aux autres. Inviter le monde est notre mission. Celui qui possède une bonne nature viendra en fin de compte. Un Murabbi doit également veiller à l'épanouissement de la Jamaat dans le domaine de la moralité et du savoir.
Un Morabbi doit jouer son rôle à cet égard et il doit attirer l'attention des secrétaires concernés à cet égard. Et surtout, comme je l'ai dit plus tôt, il doit accorder une attention particulière à la prière. Notre mission consiste à user des ressources dont nous disposons et à utiliser les connaissances que nous possédons. Nous devons faire de notre mieux tout en ayant recours à la prière. Ainsi donc, vous devez vous prosterner devant Allah et vous devez prier pour que ces efforts portent de meilleurs résultats. Si nous implorons Allah de cette manière, certainement nos actions seront bénies. Qu'Allah bénisse nos œuvres et que vous puissiez aussi remporter de grands succès sur le terrain lorsque vous allez servir. Qu'Allah accorde l'opportunité à tout Murabbi de servir à la religion là où il a été affecté. Et qu'Allah vous transforme tous en grands soutiens du calife et que vous soyez à la hauteur des attentes de Dieu à l'égard d'un Waqf Zindagi, que vous soyez à la hauteur des espoirs du Messie premier Islam, et que vous soyez un exemple pur qui va engendrer une révolution dans le monde. Qu'Allah accorde la possibilité à vous tous d'agir en ce sens. Amin.